है, दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका है स्पेसिफिक एप्लीकेशन, पहला है जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। पहला है जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जनरल एस्पेक्ट एंड जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, so right to equality, as we know that it's a fundamental right. It is provided by article 14. It is provided by article 14. लिखना नहीं है, बेरेट निकालो पहले, बेरेट टेक्स्ट अपना। आर्टिकल 14 पहले समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। अब मैं एक बार पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस ये है, पहले आप बताओ, आप लोग सुन पा रहे हैं ढंग से मुझे? यस सर। शक्ति? यस सर। कर दिया था? बताओ यार क्या है। हाँ शक्ति, सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, और इमेज ठीक आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है यहाँ से। नो सर, इट्स वेरी क्लियर। ओके, आरुषि सेम विद यू? ठीक है, सो आर्टिकल 14 हैज टू एस्पेक्ट्स। आर्टिकल 14 हैज टू एस्पेक्ट्स। ना लिख के ये लिखो, राइट टू इक्वालिटी हैज टू एस्पेक्ट्स। राइट टू इक्वालिटी हैज टू एस्पेक्ट्स। तो एक तो है जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, और दूसरा है स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। जनरल एप्लीकेशन आपको कहां मिलता है? यू विल फाइंड जनरल एप्लीकेशन इन आर्टिकल 14। यू विल फाइंड जनरल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी general application of right to equality you will find in article 14. General application of right to equality you will find in article 14, and specific application of right to equality you will find in article 15, 16. article 15, article 16. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। राइट टू इक्वालिटी इज योर फंडामेंटल राइट। It is a fundamental right which is guaranteed to the people of India. To the people of India. It is a fundamental right which is guaranteed to the people of India. Right to equality is guaranteed to all. Right to equality is guaranteed to all. Article 15 और 16 के बारे में क्या है? Specific articles are only meant for the welfare of the citizens. They are only meant for the welfare of citizens. Citizens of India. Article 14 is applicable on all. तो Article 14 has its wide ambit. लिख लो, Article 14 has its wide ambit. अभी सिर्फ मैं पूरा उसका नरेशन बता रहा हूँ। Article 14 has a wide ambit applicability on all the persons. Article 14 is wider in connotation. It has a wider ambit. It is applicable on all the persons. It is applicable on all the persons. While specific articles, that is Article 15 and 16, are applicable on only the citizens. Only the citizens. Only the citizens. ठीक है, Article 14 के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है, Article 14 provides for equality. Article 14 provides for equality. ठीक है, जैसे सारे राइट्स के बारे में हम सीखते हैं, वैसे इक्वालिटी के बारे में भी सीखेंगे। इक्वालिटी, वेदर इक्वालिटी इज और इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर, द आंसर इज यस। इक्वालिटी इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर।
इक्वालिटी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये बोला गया था इंदिरा साहनी 2 में, इंदिरा साहनी 2, इंदिरा साहनी 2। तो केस का नाम है इंदिरा साहनी 2। इंदिरा साहनी 2 में पहली बार बोला गया है, पहली बार क्या बहुत बार बोला गया है, बट स्पेसिफिकली यू हैव टू मेमोराइज दिस केस लॉ, दैट इट वाज इन इंदिरा साहनी 2 that right to equality was considered as a basic structure। ठीक है, it is the basic structure of our constitution, it is the basic structure of our constitution। ठीक है, now article 14 निकालो एक बार, प्लीज टेक आउट आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 निकालिए। ठीक है, आर्टिकल 14 निकालिए। आर्टिकल 14 पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 जनरल एस्पेक्ट, आर्टिकल 14 स्पेसिफिक एस्पेक्ट, हाँ 15-16 इज द जनरल एस्पेक्ट, 15-16 स्पेसिफिक एस्पेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी इक्वालिटी, दैट इज it is applicable on all the persons, whereas specific equality is only for the benefit of the citizens। ठीक है, now before proceeding with article 14, let's have a look at the preamble। preamble क्यों पढ़ना जरूरी है? preamble इसलिए पढ़ना जरूरी है, basically it is all the concepts which are provided in your constitution has been condensed into your preamble। तो preamble देखो क्या कहता है, how equality has been dealt in preamble, equality of status and opportunity, equality of status and opportunity, equality of status, equality of opportunity, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा? अच्छा, इससे तुम्हारा राइट टू लाइफ भी इफेक्ट होगा, इससे तुम्हारा राइट टू लाइफ भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इट विल बी सपोर्टिंग योर राइट टू लाइफ। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस justice, liberty and equality, justice, liberty and equality, equality of status and opportunity। इसके ऊपर डिबेट, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप प्रियम्बल में जो एंश्योरिटी, जो डिक्लेरेशन, सॉरी, जो प्रियम्बल में जो डिक्लेरेशन है, डज इट ओनली कॉरस्पॉन्ड टू 15 and 16 वाली इक्वालिटी, और इट इज कवरिंग 14 ऑल्सो? प्लीज टेल मी। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग्स देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individuals and the unity and dignity of the nation। ठीक है, सो एक तरफ मैंने बताया आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर जनरल इक्वालिटी, आर्टिकल 15-16 प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक इक्वालिटी, मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। Now when you look at the word, when you look at preamble में बोला है कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी तीनों चीजें हम अपने सिटीजन्स को देंगे। तो इज द preamble टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इक्वालिटी, और इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी ऑफ 14, इक्वालिटी विच इज प्रोवाइडेड इन 14, और इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप ऑफ इक्वालिटी? बताइए आप लोग, क्वेश्चन समझ में आया? It may include all the type of equality, as it does not specify that it is citizens who are taking the oath of the preamble. So it is we the people. So any person who resides or stays in India. वी द पीपल तो सिटीजन्स की बात हो रही है, मगर यहाँ पे जब ये एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन्स, तो इट सीम्स टू बी that only specific equality is being covered in the preamble, but actually the scene is different, because 15 and 16, the source of this article is 14 only। तो जहां पे 15-16 होगा वहां पे 14 तो होगा ही होगा। ठीक है, सो आंसर आपका ये होना चाहिए 14, बिकॉज फॉर्म 14 इज ऑन ओमनिबस प्रोविजन।
It is an omnibus provision. It penetrates into all the other articles. It penetrates into all the other articles. तो आर्टिकल 14 का जो पेनिट्रेशन है 15 में भी है और 16 में भी है. तो ऐसा नहीं कि 15 और 16 को आप आइसोलेटेड वे में पढ़ लोगे. जब भी इक्वालिटी की बात होगी तो 14 भी पढ़ा जाएगा, 15 भी पढ़ा जाएगा और 16 भी पढ़ा जाएगा. ठीक है. सो 14 को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. प्रियम्बल में one thing has been declared that the citizens will be ensured equality of status and opportunity. 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 अब मैं इसको समझाता हूं. Equality of status and opportunity. अब आर्टिकल 14 निकालो. Equality of status and opportunity. Equality of status and opportunity. Take out article 14. नाउ आर्टिकल 14 पढ़ते हैं. आर्टिकल 14 में दिया हुआ है हाँ 14 में दिया हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, the state shall not deny any person. So state shall not deny to any person, state shall not deny to any person equality before the law. Equality before the law and equal protection of laws. Equal protection of laws within the territory of India. ठीक है. Within the territory of India. ठीक है. So Article 14 provides for two things, that is equality before the law and second is equality before the law, second is equal protection of laws. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है? लिख लो. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है दैट इज नो वन शैल बी ट्रीटेड, नो वन शैल बी ट्रीटेड, नो वन शैल बी ट्रीटेड with any special privilege. No one shall be treated with special privilege all the people are subject to, all the people are equal subject to, all the people are equal subject to all the classes of ordinary law, all the classes of ordinary law. All the people are subject to, all the people are subject to, all the people are equal subject to all the classes of ordinary law, all the classes of ordinary law. ठीक है. all the classes of ordinary law. तो equal protection, equality before का law का मतलब क्या है? that no one shall be given any special privilege. किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर क्या है, ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ऑल द ऑर्डिनरी लॉज, तो ऑर्डिनरी लॉज के व्यू में, ऑल द ऑर्डिनरी लॉज के व्यू में ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, ऑल द पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वली. किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी. जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी एससी के ऊपर भी सेम अप्लाई होगा, जनरल क्लास के ऊपर भी सेम अप्लाई होगा, ओबीसी के ऊपर भी सेम अप्लाई होगा.
ठीक है, बिकॉज इट इज अ ऑर्डिनरी लॉ, इट इज एन ऑर्डिनरी लॉ, तो दिस इज बस इक्वलिटी हैंड बिफोर साइन लॉ। करा के फिर लेजिस्टिफाई का डाल देना। अगर उधर से हैंड साइन आए तो हम उसको ये लेजिस्टिफाई से पुश करा के कुछ कर नहीं पाएंगे। आरुषि क्या मतलब उसका, मैं समझ नहीं पाया क्या। हेलो। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है दैट नो वन शैल गेट अ स्पेशल प्रिविलेज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब है दैट इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, 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 ऐसे लिखो, द पर्सन्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, the persons in similar circumstances will be treated equally. The persons in similar circumstances, the persons in similar circumstances will be treated equally. The persons in similar circumstances will be treated equally. Equal protection of laws. The persons in similar circumstances will be treated equally. ठीक है, अब दोनों का मतलब समझ लो। इक्वलिटी बिफोर लॉस का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? दैट इज नो वन शैल बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, द पर्सन्स हु आर प्लेस्ड इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल बी ट्रीटेड इक्वली। अभी अगर हम सब सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में प्लेस्ड हैं, जैसे मैं, तुम, हम दोनों जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो लॉ विल बी ट्रीटिंग अस इक्वली। ठीक है, लॉ विल बी ट्रीटिंग अस इक्वली बिकॉज सिमिलरली वी आर सिमिलरली प्लेस्ड इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, had it been the case that you belong to Jammu Kashmir and there is some law only for the welfare of the people who are residing in Jammu Kashmir, so we are not placed in the similar circumstances. ठीक है, however all the people who are belonging to Jammu Kashmir, they are placed in the similar circumstances and this law will be treating all of them equally, but with respect to me and you the law is different, the circumstances are different. ठीक है, अब इसमें से एक कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज स्पेशल प्रिविलेजेस विल नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन। एक स्पेशल प्रिविलेजेस विल नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन। ठीक है, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। आउट ऑफ दीज टू कंसेप्ट विच इज द पॉजिटिव कंसेप्ट, विच इज द नेगेटिव कंसेप्ट? फर्स्ट वाला, so this is a negative connotation, so equality before law has a negative connotation. So equality before law has a negative connotation. Equal protection of laws, equal protection of laws has a positive connotation. पॉजिटिव कॉनोटेशन जहां पे भी होगी, पॉजिटिव कॉनोटेशन जहां पे भी होगी, वहां पे एजर्टिव एक्शंस होंगे, वहां पे एजर्टिव एक्शंस होंगे, वहां पे एजर्टिव एक्शंस होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हेन यू लुक एट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज बिफोर ऑर्डिनरी लॉज, बिफोर ऑर्डिनरी लॉज ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, बिफोर ऑर्डिनरी लॉज ऑल द पर्सन्स आर इक्वल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सर्कमस्टेंसेस की भी बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सर्कमस्टेंसेस की बात करता है, मतलब ए एंड बी, both of them are located, both of them are in the similar circumstances, so law will treat them equally. A, B are having different circumstances,
Then assertive actions can be done by the state. Assertive actions can be done by the state. Now assertive actions का मतलब क्या है? Assertive actions का मतलब है कोर्ट, वो जो स्टेट है वो कुछ ऐसे मेजर्स ले सकता है, कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स ले सकता है कि इन दोनों को जहां तक हो सके लेवल प्लेइंग फील्ड दे सके वो। जैसे A is a male, B is a woman or child. A is a male, but B is a woman or child. So state can take measures for the upliftment of women. State can make laws for the welfare of women. ठीक है? So this is not discrimination. This is not discrimination. This is not at all discrimination. This is an assertive action of the state just to bring both the classes, just to bring both the persons, or just to provide opportunity to both the persons, or just to provide equal or level playing field to both the individuals. ठीक है? So is the declaration provided in the preamble justified or not? Yes, the preamble made a declaration that we will be providing equality of status and opportunity. So by granting, by doing assertive actions, we are giving level playing field to both the individuals, है ना? So state has done some assertive actions. State has done assertive actions. ठीक है? So जब भी equality before law की बात आएगी, ठीक है, negative connotation. जब भी equality, equal protection of laws की बात आएगी, यहाँ पे positive actions है. Equality before law is a concept of British Constitution, whereas equal protection law is a concept of US. ठीक है? It was introduced after the 14th Constitution Amendment. After the 14th Constitution Amendment. 14th Constitution Amendment, यूएस में जो 14वां Constitution Amendment था, उसके बाद ये कंसेप्ट आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है? तो इसको मैं अभी समराइज करता हूं, फिर उसके बाद में आई विल प्रोसीड विद क्लास एंड क्लास क्लासिफिकेशन. क्लास एंड क्लास क्लासिफिकेशन. प्लीज राइट डाउन. राइट टू इक्वालिटी इज अ right to equality is a fundamental right. Right to equality is a fundamental right enshrined in Article 14. Right to equality is a fundamental right enshrined in Article 14 of the Constitution. Enshrined in Article 14 of the Constitution. It is assured to the people of India. It is assured to the people of India. It is assured to the people of India. Article 14 provides for Article 14 provides the corresponds to Article 14 corresponds to the idea of equality. Article 14 corresponds to the idea of equality. Article 14 corresponds to the idea of equality enshrined in the preamble. Article 14 corresponds to the idea of equality enshrined in the preamble. Enshrined in the preamble. It lays down the principle of it lays down the general concept of equality. It lays down the general concept of equality, while Article 15 and 16 it lays down the general concept of equality, while Article 15 and 16 provides for the specific, while Article 15 and 16 provides for specific application of right to equality,
Specific application of the right to equality. Full stop. Article 14 has a wider ambit. Article 14 has a wider ambit. Article 14 has a wider ambit. It applies to all the persons. It applies to all the persons in India. Article 14 has a wider ambit. It applies on all the persons in India. Whereas Article 15 and 16, Article 15 and 16 applies or is available to the citizen of India, is available to the citizen of India, is available to the citizen of India. 15, 16, 17, 18, 18 भी manifestation है. Is available to the citizen of India. 18 भी जो है ना freedom of right to equality का ही वो है manifestation. So these are available to the citizen of India. ठीक है, आगे लिखो. It is available to the citizen of India. ठीक है, full stop. Right to equality is a basic structure. लिख सकते हो. Equality का ही manifestation है वो. Right to equality is a basic structure so held in Indrasani. So held in Indrasani. Case number 2. Indrasani case number 2. Indrasani case number 2. Paragraph change करो, लिखो. Article 14 provides for equality before laws. लिखो, Article 14 provides for, inverted commas में लिखो, no one shall be denied. Article 14 provides for, inverted commas में लिखो, no one shall be denied. No one shall be denied equality. No one shall be denied equality before law. Equality before law or equal protection of the laws. Equal protection of the laws. Equal protection of the laws by the state. Equal protection of the laws by the state within the territory of India. 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 Equality is a right. Equality is a right which is very important for human existence. Equality is a right which is very important for human existence. Equality before law. Equality before law is equality before law is an essential facet of rule of law. It is an essential facet of rule of law. It is an essential facet of rule of law. It is an essential facet of rule of law. It is an essential facet of a rule of law. Full stop. The word equal protection of laws. The word equal protection of laws
is the part of US Constitution, is the part of US Constitution, is the part of US Constitution, is the part of US Constitution 14th Amendment, is the part of US Constitution 14th Amendment. Same phrase occur or same phrase appear in Article 7 of UDHR. UDH मतलब Union Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights. Same article appears, same phrase appears, same phrase appears in Article 7. Same phrase appear in Article 7 of UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights 1948. Universal Declaration of Human Rights 1948. ठीक है? Even the preamble of UN Charter, even the preamble of UN Charter has given the reference of equality. Even the preamble of UN Charter has given the reference of equality. Even the preamble of UN Charter has given the reference of equality. I am using VN Shukla. जनरल डिक्टेशन के लिए VN शुक्ला यूज करूंगा. इंदिरा साहनी के लिए I will be taking reference from the article. इंदिरा साहनी के लिए रिजर्वेशन जो पढ़ाऊंगा ना, रिजर्वेशन के लिए I will give you a handout also. वो एक चीट शीट है, उससे कभी रिजर्वेशन भूलोगे नहीं. रिजर्वेशन के जो भी इंपॉर्टेंट टेनेट्स है, ठीक है. फिर I will give you another handout with respect to economical weaker sections. ठीक है. सो एक वो पढ़ेंगे. तो 3 रिजर्वेशन जब पढ़ेंगे तो 3 पार्ट्स में उसको पढ़ेंगे हम. नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? पैराग्राफ चेंज करके लिखो. इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज अ नेगेटिव connotation, which means equality before law has a negative connotation, which means absence of any special privilege, which means absence of any special privilege, absence of any special privilege, absence of any special privilege to any person, absence of any special privilege to any person, absence of any special privilege. हमने 12:35 पे क्लास शुरू कर दी थी. हाँ चलो 45 पे. अभी देख रहे हो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स होने वाले हैं और अभी हमने सिर्फ डिक्टेशन शुरू करी है. और हम जब एकेडमिक्स में पढ़ते हैं तो 1 घंटे की क्लास होती है. 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाते वहां, समझ रहे हो? तो कुछ किसी कंसेप्ट को समझाने में जैसे कहते हैं इंजन गर्म होगा क्लास खराब हो जाती है, वैसी हो जाता है. ठीक है, आगे लिखो. नो वन शैल बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज बिफोर द लॉ. आगे लिखो इक्वल सब्जेक्ट नहीं, क्या बोल लिखा था? Sir, equality before law has a negative connotation, which means absence of any special privilege to any person. To any person. देखो every person is Any person. full stop. Every person is an equal subject. Every person is an equal subject. Every person is an equal subject to all the classes of ordinary before all the classes of ordinary law. Before all the classes of ordinary law. Before all the classes of ordinary law. Before all the classes of ordinary law.
before all the classes of ordinary law, no person is above the law. No person is above the law. No person is above the law. And he is subject to ordinary jurisdiction of, and he is subject to ordinary jurisdiction of the ordinary courts. And he is subject to ordinary jurisdiction of the ordinary courts. And he is subject to original jurisdiction of the ordinary courts. And he is subject to the original jurisdiction of the ordinary court. ये हो गया equality before law, ordinary courts. Now another concept is equal protection of laws. Equal protection of laws. It is a positive concept and requires assertive action of the state. It is a positive concept. क्या हुआ? अरे बाद में. It is a positive concept, requires assertive action. It is a positive concept, requires assertive action. It is a positive concept, requires assertive action by the state. Requires assertive action by the state. Positive concept requires assertive action by the state. That is all the persons placed in similar circumstances. That is all the persons placed in similar circumstances. All the persons placed in similar circumstances will be given equal treatment. Will be given equal treatment. Will be given equal treatment under the law. That is, they will be governed by the same set of principles. That is, they will be governed by the same set of principles. They will be governed by the same set of principles. It is guaranteed by equality. It is guaranteed by equal protection of laws. It is the guarantee provided by equal protection of laws. It is the guarantee provided by equal protection of laws. Protection of laws. ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो. इक्वल लॉ is equal to equal hand equal to equals. Equal law to be applied. Sir, equal law equal to equal hand. To be applied with equal hand, to be applied on equals. ऐसे लिखो. It's not a game, it's a rich thing.